যে আনিল প্রেমাদান পরম কাচু से ऐसा लगता था कि वो युद्ध जो है वो रोकना चाहता था, but he actually wanted to kill all the people that he killed. लेकिन वो सभी को मारना चाहता था, because he wanted to show that anyone who is actually against religious principles or against his devotees will be vanquished. भगवान ये दिखाना चाहता था कि कोई भी व्यक्ति आध्यात्म के ओर रहेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, और भक्त के विरोध रहेगा तो उसका भी सर्वनाश हो जाएगा. And he wanted to show that no matter how overwhelming were the odds, you understand that? He wanted to show that no matter how overwhelming the opposition was, वो ये भी दिखाना चाहता था कि कितना भी अद्भुत जो दूसरा पार्टी था वो था शक्तिशाली. then there would be, with Krishna there, and those who serve Krishna, there will always be victory and morality. जब कृष्णा वहाँ था और जो भी कृष्ण के सेवा करते हैं तो वहाँ पर हमेशा जीत ही रहता है. He showed Arjuna that these men were already killed. उन्होंने अर्जुन को दिखला दिया कि ये जितने लोग हैं सब मरे हुए हैं. He showed him a vision that these men were already killed. उन्होंने दिखलाया था कि ये सब मरे हुए हैं. Arjuna just simply had to go through the motions. अर्जुन केवल उस भ्रम में पड़ गया था. Actually, this is a very good point here. ये बड़ा अच्छा बात है. Sometimes the devotee thinks that Krishna needs him. कभी-कभी भक्त ऐसे सोचते हैं कि कृष्ण जो भगवान है उनके बहुत जरूरी है. Sometimes the devotee thinks that he needs Krishna needs him to make things right. कभी-कभी भक्त ये सोचता है कि कृष्ण मेरे जरिए कुछ कार्य करवाना चाहते हैं. Actually, Krishna needs no one. कृष्ण को किसी का जरूरी नहीं है. Krishna is completely independent. कृष्ण पूर्ण तरह से स्वतंत्र है. He wanted that battle to go on, the battle of Kurukshetra. He wanted it to be fought. कृष्ण चाहता था कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हो, but actually he had already killed everyone. लेकिन उन्होंने तो सबको मार दिया था. It's a pastime. जैसे उनका लीला था उसी तरह. Shri Data, why don't you sit there and you won't get to there? Sit. Look, sit up there. The only thing I wanted to add was that while Krishna is independent, sometimes he makes himself dependent upon his devotees as a sign of love. मैं ये जोड़ना चाहता था क्योंकि कृष्ण स्वतंत्र है, फिर भी वो कभी-कभी ऐसे दिखलाना चाहते हैं कि वो स्वतंत्र नहीं है, निर्भर है अपने भक्तों पर. As for example, when he places himself under the control of Mother Yasoda. उदाहरण के रूप में जैसे कभी-कभी यशोदा मैया कृष्ण को कंट्रोल करती है. But we should never mistake Mother Yasoda's controlling Krishna to indicate that this means that Krishna is not God. लेकिन ये गलत नहीं सोच लेना चाहिए कि जब माता यशोदा मैया जब कृष्ण को देखभाल करती है तो कृष्ण भगवान नहीं है.
generally the Christians and other theists can only understand God as the controller. क्रिश्चियन लोग और अन्य लोग केवल भगवान कृष्ण को ही समझ सकते हैं. But we understand that the higher manifestation of God is when he agrees to be controlled by his devotees' love. लेकिन हम इसका समझते हैं कि उसके ऊपर का भी समझ है जब भगवान अपने भक्तों के बस में कार्य करते हैं, प्रेम के संबंध का. And there is a competition going on between Krishna and Krishna's devotees. और भगवान के भक्त के समक्ष कंपटीशन करता है. Each wants to be controlled by the other. दोनों कोशिश करते हैं कि कौन किसको कंट्रोल करता है. And in fact, when Krishna is defeated by his devotee, जब भक्त कृष्ण को पराजित कर लेते हैं, specifically by Srimati Radharani, जैसे कि श्रीमती राधा रानी से भी, then he takes the form of Lord Chaitanya. तब वो अपना स्वरूप को बदल लेता है और चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं. This is the form of God experiencing what it is like to be the devotee of the Lord. ये जो स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु को, ये स्वरूप में भगवान दिखाते हैं कि भक्त बनना उसका अनुभव क्या होता है. Chaitanya Mahaprabhu's appearance is the most extraordinary of all appearances of God. चैतन्य प्रभु का जो स्वरूप है वो बहुत विचित्र है और अन्य विस्तार स्वरूप से. God acting as the devotee of God. भगवान भक्त के रूप में आते हैं. Actually, the Christians have made their philosophy to explain that Jesus is God acting as the devotee of God, the Son of God. क्रिश्चियन लोग ये कहते हैं कि जीसस जो है वो भक्त है और वो भगवान का एक पुत्र है. In that sense, there's some similarity तो between the two philosophies. दोनों में समझ में कुछ भ्रांति है. Do we get another question? दूसरा प्रश्न. Same man. I think I will answer the second part of the question first, and then I will let Arjuna Prabhu answer the first part of the question after. Because the first part of the question is the definition of what is humble. Then once we get the definition of what is humble, then we can try to understand the second part of the question, or the first part of the question. So the first part of humility, we quoted this morning, Trinadati Sinicheno, Tadorati Sinicheno. So you should know. First of all, that one should be more humble than a blade of grass. This is the definition given by Sri Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें घास की तरह नम्र रहना चाहिए. Prabhupada explains that a blade of grass is trampled upon. श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो घास होता है वो एक दूसरे के ऊपर Sometimes you set a straw in the street. जैसे कि कभी-कभी रास्ते पर A straw in the street is very, very insignificant. जो टुकड़े पड़े होते हैं वो बहुत नीचे होते हैं रास्ते पर. It's hard to imagine something more insignificant than a piece of straw in the street. Everything is stepping on it. उससे नीचा स्तर और किसी वस्तु का नहीं होता है क्योंकि सब लोग उसके ऊपर चलते जाते हैं. So, this type of humility, again, the professor at USP
gave the introduction, and he used the same example we often quote, that the tree with the most fruits bows the lowest. इस तरह के उदाहरण जो प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में उन्होंने दिया था, जब जैसे कि हम ये उदाहरण हमेशा बोलते हैं कि जो पेड़ में फल बना हुआ रहता है वो झुक जाता है नीचे जमीन की ओर. We see that great devotees of the Lord express themselves saying that they have no good qualification whatsoever. हम देखते हैं भगवान के जो महान भक्त होते हैं वो कहते हैं कि हमारे अंदर ऐसा कुछ अच्छा गुण इत्यादि नहीं होता है. So humility is described that the pure devotee of the Lord sees everyone else as serving Krishna except for himself or herself. जिसके अंदर ये नम्रता का भावना होता है वो इस तरह सोचता है, वो एक पवित्र भक्त होता है और इस तरह सोचता है कि मैं सेवक हूँ सभी का और भगवान का सेवा इस तरह से. Today, our Godbrother Chaitanya Chandra Prabhu was mentioning about humility. Remember what he said in the house? Or was it you who said? आज मेरा गुरु भाई चैतन्य चंद्र प्रभु ये नम्रता के विषय में मुझे घर पर बतला रहा था. And he said humility means to accept whatever the spiritual master orders and to carry it out. उन्होंने कहा था कि नम्रता का अर्थ ये है कि गुरु जो कुछ बोलता है उसे स्वीकार करना और उसको पालन करना. And he was explaining that sometimes, for example, in the case of Hanuman, who was fighting for Ram, that someone may say that that fighting mood doesn't seem to be an act of humility. But we know that he was actually very humble. तो जैसे हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए युद्ध करते थे तो कोई सोचेगा कि ये तो बहुत नम्रता का भावना नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान के लिए था तो वो नम्रता का भावना था. And we see also that Arjuna was very humble, even though he was fighting. हम ये भी देखते हैं कि अर्जुन जी बड़े नम्र भाव में थे जबकि वो युद्ध कर रहे थे. One could question, this is too much for me now. I can't take this fan. Can you turn the fan's speed down, or it only has one speed? Krishna told Arjuna to shoot and fight with Bhishma. कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि भीष्म से युद्ध करो. And yet, Bhishma is his grandfather. और भीष्म उनके नाना राजा थे. Arjuna showed what humility is in accepting the order of Krishna upon his head. तो अर्जुन ने वहाँ पर दिखला दिया कि नम्रता का कैसे नम्र बनो, क्योंकि उन्होंने कृष्ण का आज्ञा को अपने सर पर ले लिया. So Chaitanya Chandra Prabhu made the point that the order of the Guru, accept the order or the instructions of the spiritual master instead of the understanding or ideas that one's mind creates is a sign of real humility. तो चैतन्य प्रभु ने कहा कि गुरु का आज्ञा को मानना और अपने मन से It's a sign of humility. ये नम्रता का लक्षण है. To not expect any praise or respect for oneself, but to give all praise or respect to others. अपने आप के लिए मान सम्मान नहीं खोजना है, बल्कि दूसरे को मान सम्मान करना है. To call others Prabhu. दूसरे को प्रभु बोलना है. And to understand ourselves as Das, Amadas. और अपने आप को दूसरे के दास समझना चाहिए. That's a little bit, but I can say more perhaps. But first I will let, now, Rajasthan Prabhu perhaps can address the second part, or the first part where you asked
what should one do? We are told to be humble, but at the same time we are afraid of being taken advantage of. पहला भाग का प्रश्न रजिस्टर प्रूव करेंगे। Actually, when one takes shelter of the spiritual master, जब कोई गुरु के शरण में जाता है and he asks Krishna, "My dear Lord, please instruct me." और कृष्ण से प्रार्थना करता है कि मुझे आप उपदेश दीजिए। In other words, when he actually takes shelter of the spiritual master, वो जब गुरु के शरण लेता है तब at that point, Krishna is actually guiding him through different things in his life, but it's all being controlled by Krishna. उस स्तर पर कृष्ण सभी कुछ उसके जीवन में कार्य करने को करते हैं, लेकिन वो सब जो कार्य वो व्यक्ति करता है वो सब कृष्ण के निरीक्षण में होता है। In my personal experience, I've been given many different services. मेरा अपना उदाहरण है, मुझे अलग-अलग सेवा दिया गया था। So I would always ask Srila Prabhupada and pray, please give me the ability to follow your instructions. तो मैं हमेशा श्री प्रभुपाद से प्रार्थना करता था कि प्रभुपाद मुझे वो शक्ति दीजिए ताकि मैं आपका जो वाणी है उसका पालन कर सकूं। If it was not a favorable situation, Krishna would remove it. लेकिन जब ये हमारे अनुकूल अगर नहीं रहता तो कृष्ण हमको हटा देते। Let me explain this one word, surrender. तो मैं शरणागत क्या है उसके विषय में बताऊंगा। Surrender means to give up your desires for the desires of another. शरणागति का अर्थ है कि अपनी इच्छा को छोड़कर दूसरे का इच्छा को अपना लें। That's what separates devotees from the non-devotees. ये अंतर कर देता है भक्त और अभक्त। The non-devotee mind is anxious to show how he can think separately from the desire of the spiritual master. The non-devotee is always showing how he can think separately, differently from the orders of the spiritual master. जो अभक्त होता है उसका जो विचार होता है गुरु के विचार से अलग होता है। Intelligence is shown when one can give up his point of view and accept the viewpoint of the spiritual master. That is surrender. बुद्धिमान उसको कहते हैं जो अपना इच्छा को छोड़कर गुरु के इच्छा के अनुसार कार्य करता है उसे शरणागति कहते हैं। Everyone in this room can act separately from the desire of the spiritual master. That requires no intelligence. इस कमरे में जो भी कोई बैठा हुआ है सब गुरु के आज्ञा से विरोध कार्य कर सकते हैं। How many people are intelligent enough and strong enough to give up their desires for the desires of the spiritual master? कितने लोग यहाँ पर है जो बुद्धिमान है और उनमें शक्ति है कि अपनी इच्छा को छोड़कर गुरु की इच्छा के अनुसार कार्य करें। That is a very powerful devotee. वो बहुत शक्तिशाली भक्त है। So, if you have that mentality of surrender, तो ऐसा विचार शरणागति का हमारा होगा and you're always praying to the spiritual master and Krishna, और हम हमेशा गुरु और कृष्ण को प्रार्थना करेंगे, you will not be exploited by anyone else. तो कोई दूसरा व्यक्ति खराब विचार या खराब तरह से हमारे ऊपर पेश नहीं आएगा। Krishna says in the Bhagavad Gita that he never forsakes the devotee. Twice. Abandon. Krishna never abandons the devotee. कृष्ण कहते हैं भागवत गीता में वो भक्त के संग कभी नहीं छोड़ते। He's there to protect you at every moment. वो हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। Actually, that disciple who actually places himself at Krishna's mercy becomes a very strong devotee. जो भक्त कृष्ण के कृपा के लिए तैयार रहता है वो बहुत शक्तिशाली भक्त बनता है। Because Krishna will never let him down. क्योंकि कृष्ण उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। And he'll become so enlightened by every time he takes shelter of Krishna, Krishna will come through for him. और वो हमेशा उनके हृदय में इतना उज्ज्वलता भर जाएगी कि जब वो कृष्ण
पुकारेंगे और कृष्ण उनको हमेशा सहयोग देगा। One is he only feels that he's been abandoned when he acts independently. हम जब अपने इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तब हम सोचते हैं कि हम अलग हो गए। This is a small mystery of devotional service. ये एक छोटा सा रहस्य है भक्ति मार्ग। That Krishna always reveals himself to the surrendered devotee. कृष्ण अपने आप को जो भक्त शरण में है उनके केवल उनके प्रति ही आते हैं। If you find a situation you think is not conducive for your spiritual life, and you immediately pray to Krishna, Krishna will come. कभी-कभी ऐसा होगा कि आप सोचते हैं कि मैं दुखी हालत में ऐसे हूँ, लेकिन अगर आप कृष्ण को पुकारेंगे तो कृष्ण जरूर आएगा। And on the other hand, if you're in a situation and someone is trying to exploit you, और कभी आप ऐसा समस्या आपके ऊपर आ गया है कि कोई दूसरा व्यक्ति खराब तरह से आपके प्रति पेश आ रहा है, then that same supreme Lord will also give you fire to defend yourself. तो वही भगवान श्री कृष्ण आपको शक्ति देगा कि आप उसके विरोध में कार्य कर सकेंगे। But he will never abandon you. लेकिन वो कभी छोड़ेगा नहीं आपको। After so many years of practice, Krishna consciousness, we see this does not find some degree of pleasure. What is the reason? Also, how can we convince others who are very neophyte or newcomers? How can we convince them that this Krishna conscious pleasure is optional pleasure? शुरू में कृष्ण भावना में जब हम आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये कृष्ण भावना में आनंद ही आनंद भरा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हमको ये आनंद पता नहीं लगेगा। तो नए जो भक्त होते हैं उनको कैसे हम बता सकते हैं कि कृष्ण भावना संग जो है इसमें आनंद से भरपूर, यानी कि आनंद ही आनंद है। Question is that we hear that Krishna consciousness is anandam bhujivartanam, an unlimited ocean of pleasure. Yet after many years of practice, we may not feel that pleasure. And how can we convince others about the pleasure of Krishna consciousness? We have to be cautious to begin with to understand what is real pleasure. We should understand what pleasure means. हमें समझना चाहिए कि आनंद क्या है। Do you think that Arjuna Krishna conscious? क्या आप सोचते हैं कि अर्जुन कृष्ण भावना में था? Well, do you think that he was experiencing pleasure while killing his grandfather and others? क्या वो जब अपने परिवारजन को मार रहा था तो उसे आनंद आ रहा था? Huh? Says yes. हाँ कह रहा है। If you preach that, at least in Western countries, people will think that you are a very sick person. They might call you someone like Hitler. जब आप पश्चात्य देश में प्रचार करोगे तो लोग कहेंगे आप बहुत बीमार व्यक्ति है और आप हिटलर हो। Perhaps the word satisfaction, we need to discuss what is the difference between pleasure and satisfaction. हमें संतुष्टि और आनंद जो शब्द है इस पर हमें बात करना है। It's described, for example, that the gopis had no motive for their own pleasure. जो गोपी थे उनके अपना कुछ आनंद उठाने का कुछ Their only interest was to give pleasure, to please Krishna. उनका एक ही विचार रहता था कि किस तरह से कृष्ण को आनंद पहुंचाए। In Krishna's pleasure, they found, or they took pleasure.
कृष्ण को आनंद जब वे दे रहे थे तब उनको ऐसा लगता था कि वे भी आनंद खा रहे थे। Therefore, the word satisfaction may be more suitable for our understanding. इसीलिए संतुष्टि जो शब्द है समझने के लिए और अच्छा रहेगा। If we try to enjoy Krishna, that is not a proper understanding of service. अगर हम कृष्ण को आनंद करना चाहें तो वो बहुत अच्छा समझ नहीं है सेवा का। But if we try to give pleasure to Krishna, then we will feel ourselves pleased because we are parts and parcels of Krishna. And when the whole is pleased, the parts become pleased. When the food is given to the stomach, then all the parts of the body become pleased and nourished and healthy. लेकिन जब हम कृष्ण को आनंद पहुंचाएंगे तो आप हमें आनंद मिल जाएगा। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारा पूरा शरीर तंदुरुस्त हो जाता है। उसी तरह से Prabhupada uses the example of if you try to put food into the eye or the ear, that will not give pleasure. प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम भोजन आँख में छोड़े या कान में छोड़े तो वो आनंद नहीं देगा। But when the food is supplied to the stomach, then the eye and the ear become very pleased. लेकिन जब भोजन पेट में पहुंच जाता है तो आँख और कान आपको आनंद प्राप्त हो जाता है। So we must understand by this example that our only possibility of pleasure is Krishna's pleasure. तो इस उदाहरण से हमें समझना चाहिए कि हमारा आनंद केवल कृष्ण का आनंद है। And perversion of this is when we try to separately enjoy. और उसका उल्टा हो जाता है जब हम अलग से आनंद खाना चाहते हैं। Bhakti means to give satisfaction to Krishna भक्ति का अर्थ है कृष्ण को संतुष्ट करना without any thought of return. बिना कुछ विचार करे हुए कि हमें कुछ मिलेगा। And in the highest form of pleasure, as experienced by Srimati Radharani, she felt intense pains of separation. और सबसे ऊंचा स्तर का जो आनंद है श्रीमती राधा रानी प्राप्त करती है और उस स्तर पे वो बहुत दुख महसूस करती है कृष्ण के Sri वियोग से। Chaitanya Mahaprabhu showed severe signs of painful separation from Krishna. चैतन्य महाप्रभु ने भी बहुत गंभीर दुख अवस्था प्राप्त किया था कृष्ण के वियोग में। So I question what we mean by enjoying and happiness. I doubt, I question the meaning of enjoyment or happiness when it is used in the wrong way. तो मैं प्रश्न करता हूँ ये जो आनंद है और ये जब उल्टा तरह से जब इसका उपयोग किया जाता है तो उसके उपरांत मैं प्रश्न करता हूँ ठीक नहीं है। None means the cessation of all anxieties and distress. और ये हमारे सभी तरह के जो एंजाइटी है चिंता और परेशानी। So pleasure doesn't mean simply to have a big smile on your face, the type of smile that some intoxicated person has. आनंद का अर्थ ये नहीं कि हमारे मुख के ऊपर बड़ा सा हंसी आ जाए। But we should not misunderstand pleasure. तो हमें सही समझ होना चाहिए कि आनंद का क्या है। In fact, it is said, Atahasi Krishna Namadi Nabhavetrayam Indrahi Sevan Mukhi Jivato Sayamevishpratyaha. You can't serve Krishna with material senses, with material mind. And the pleasure that you're speaking about may come from material senses and material mind. But when the senses are purified
They only want to give pleasure to Krishna. हम कृष्ण को अपना संसारिक इंद्रिय से सेवा नहीं कर सकते, लेकिन जो सेवा के जो आनंद के बात आप कर रहे हैं वो शायद संसारिक इंद्रिय से प्राप्त हुआ और वो सही नहीं है। When we say Brahma Bhuta Prasanatma Nasochati Nakamchati, no more hankering, no more lamentation, the soul is fully joyful. जब हम कहते हैं ये श्लोक गुरुदेव ने कहा, उसमें कहा गया है कि कोई पछतावा नहीं है और किसी वस्तु के पीछे हम भागते नहीं है। This Brahma Bhuta platform, where there's no more hankering and lamenting, is when we serve without any selfish interest, and that service to Krishna is learned by service to Guru. We are trained in giving satisfaction to the order of Guru as a means of learning how to serve Krishna. ये स्तर कब आता है जब गुरु का आज्ञा को हम पालन करते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, तभी ये स्तर पर हम आ सकते हैं। That's why faith in Guru is so crucial to the path of spiritual life. इसीलिए गुरु में श्रद्धा होना बहुत जरूरी है भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए। We don't have faith that by serving Guru, Krishna is pleased, that the Guru is the via media. It becomes very difficult for us to follow properly the path of Bhakti Marg. अगर हमारे में श्रद्धा नहीं है कि गुरु कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसा जब विचार नहीं होता है और श्रद्धा नहीं होता है तो भक्ति मार्ग में हम आगे बढ़ नहीं सकते। By the mercy of the spiritual master, one gets the mercy of Krishna. Yasya prasada, bhagavat prasada, yasya prasada, nakati. Again and again, this instruction is given in our scriptures. बार-बार हमारे शास्त्रों में ये कहा गया कि गुरु की कृपा से भगवान मिलता है और भगवान की कृपा से गुरु मिलता है। दूसरा प्रश्न। Krishna said in Bhagavad Gita that we can offer a leaf or flower, but we also offer grains and so many other things. It seems that we're actually going too far. I think I understand this question. That's your question? Yes. We also तो फल पत्र ये सब मुझे अर्पण करना है, लेकिन हम कैसे अर्पण करें? अगर हम एक पेड़ को उखाड़ेंगे तो उसपे तो जीव है वो भी मरता है। In Bhagavatam it says, Jiva Jivana Sajivana. भागवतम में ये श्लोक दिया गया, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। It says all living entities are food for all other living entities. सब जो जीव है दूसरे जीव का भोजन है। Actually, we are Krishna Bhaktis, Krishna devotees. हम कृष्ण भक्त हैं। Actually, Krishna said that we should eat flesh, and we eat flesh. अगर कृष्ण कहे कि हमें मांस खाना चाहिए तो हम मांस खाएंगे। But Krishna doesn't say eat flesh. We offer what Krishna gives us to eat. लेकिन कृष्ण ने नहीं कहा कि मांस हमें खाना चाहिए, जो कुछ खाना है उसे अर्पण करके खाओ। Our foodstuffs are the fruits and vegetables that grow off the earth. हमारे खाने का है भोजन है ये शाक सब्जी इत्यादि। These are Krishna's instructions on what is our foodstuff, what is foodstuff for the human being. यही कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए। So we are instructed in Bhagavatam by our spiritual master. हमारे जो गुरु है वो भागवतम में कहते हैं हमको, we offer the fruits and flowers and artists. We offer nice vegetables. We see ourselves that Lord Chaitanya, who is Krishna himself, is also eating the nice vegetables off the earth. हमें फल फूल खाना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए और चैतन्य प्रभु भी स्वयं फल फूल खाते थे। At some point, in other words, at some point,
it has to reach the platform of surrender. किसी स्तर पर हमें जाकर शरणागति के स्तर पर आना है. When I give up my desires for the desires of Krishna, जब अपनी इच्छा को छोड़कर कृष्ण की इच्छा के अनुसार करें. Krishna says we eat the vegetables off the earth. कृष्ण कहते हैं कि शाक सब्जी में खाना चाहिए तुझे. Prepare the grains a certain way. अनाज इत्यादि. But at no point does he say that we should go out of sustenance or offer to him the animals. कृष्ण कभी नहीं कहते कि मुझे जानवर को अर्पण करना चाहिए. So we don't do that. हमें वो नहीं करना चाहिए. The point is that we want to please Krishna. हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं. By pleasing Krishna, our minds are also pleased. कृष्ण को जब हम प्रसन्न करेंगे तो हमारा मन भी प्रसन्नतापूर्वक से भर जाएगा. We can't think to ourselves what we think Krishna wants or what Krishna needs. हम अपने आप से विचार नहीं कर सकते कि कृष्ण क्या चाहता है. For instance, you'll go into an ice cream store. जैसे कि हम एक आइसक्रीम की दुकान में जाते हैं. And you tell them, I want some vanilla ice cream. उससे कहें कि मैं वनीला आइसक्रीम चाहता हूँ. He says, well, I don't have vanilla, but take this line, that's good for you. तो कहेगा ठीक है ये लाइन में जाओ अच्छा है तुम्हारे लिए. You might say, I want vanilla. ओके कि मैं वनीला चाहता हूँ. You told him what you want. आपने उन्हें बतला दिया कि आप क्या चाहते हैं. It's just that simple. Krishna says, offer me a leaf, flower, offer the grains, offer the vegetables. This is what Krishna wants. कृष्ण कहते हैं कि मुझे जल, पत्ती, पुष्प, फल और अनाज इत्यादि अर्पण करो. यही कृष्ण चाहते हैं. So what we're trying to do is come to become expert to be able to give Krishna what Krishna wants. तो हमें निपुण हो जाना चाहिए कि कृष्ण को क्या देना चाहिए जो कृष्ण चाहते हैं. We're trying to please Krishna. हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं. Before we came to Krishna consciousness, we were trying to serve our own senses. कृष्ण भावना में आने से पहले हम अपने दिल को की सेवा करते थे. We've only come to Krishna consciousness to serve Krishna. कृष्ण भावना में इसलिए आए क्योंकि हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं. That's your question. I was also thinking that in the Bhagavad Gita, 2nd chapter, and later also, Krishna explains that the soldiers are happy for whom such fighting opportunities come with the sword, for they may die in a religious battle and attain heaven. भगवद गीता में दूसरे अध्याय में बताया गया कि जो सैनिक लोग होते हैं वो बहुत खुशी हो जाते हैं कि जब वो युद्ध में जाते हैं और धर्म के लिए युद्ध करना है क्योंकि वे जानते हैं कि वो अच्छा गति पाएंगे. And Prabhupada comments in the purport that anyone who died on that battlefield, seeing Krishna went back to consciousness. और प्रभुपाद कहते हैं कि वो कुरुक्षेत्र मैदान में जो भी लोग मरे थे कृष्ण को देखते हुए सब भगवान के धाम चले गए. Now, every living entity must die in this material world. इस संसार में सभी को मरना है. So, every vegetable will die one day. तो सब शाक सब्जी भी मरेंगे एक रोज. Whether, in whatever case it dies, it must die. So, which is better, that it should die without being offered to Krishna or being offered to Krishna? किसी भी स्तर पर उन्हें मरना है तो कौन अच्छा है कि वो कृष्ण की सेवा में लगकर मरे कि कृष्ण की सेवा में ना लगकर मरे. By being offered to Krishna, it makes so much advancement, the soul will go to a much higher birth. जब कृष्ण की सेवा में मरेगा तो जीव का उद्धार होगा और वो और ऊपर का मार्ग में बढ़ेगा. But if the vegetable simply rots in the ground and dies a natural birth, no benefit. लेकिन अगर सब्जी है, तरकारी है, कैबेज है, अगर वो सड़ जाए और वहीं पर मर जाए जमीन पर कृष्ण की सेवा ना लगे तो उसका प्रगति नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा. Now, when
to Melbourne, Australia. The flight is at 8:30, so we will leave here at 6:30. श्री गुरुदेव कल मेलबर्न के यात्रा पर निकल जाएंगे और 6:30 बजे यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि 8:30 बजे एयरपोर्ट से चले जाएंगे. So we want to take this opportunity while we have a microphone, because at the airport we won't have a microphone, to thank everyone who made this visit such a wonderful experience, both personally for myself as well as for all of those who came along with me. तो मैं क्योंकि यहाँ पर माइक है और वहाँ पर माइक नहीं रहेगा, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब भक्त लोग जो यहाँ आए हैं और जो बाहर से आए हैं, जिन्होंने ये जो हमारा मिलन है इसको इतना पावन बना दिया. Many devotees took care of us in their homes, and it was such a pleasure to live with you in your homes. We look forward to further such opportunities. बहुत भक्त ने मुझे अपने घर पर रखा और बहुत आनंद हुआ और अगली बार भी इसी तरह से मैं आनंद खाने के लिए who cook also in so many places. We thank you for that. मैं धन्यवाद देता हूँ अलग-अलग स्थान पर आप सभी ने भोजन बनाया. Those who took off from their work to give us their association, we appreciate that. जिन्होंने अपने काम को छोड़कर और हमें संग किया और हमें सहायता किया, उनको भी. I think that all the devotees who came from, well, we can hear a little bit how they like it. I think I'll let them speak for themselves. तो जो भक्त यहाँ आए वो अपने आप से कुछ कहेंगे यात्रा के विषय. We can hear Tamal. Would you like to say a few words? मथुरानाथ प्रभु कुछ बोलेंगे यात्रा के विषय. Gurudev has been inviting me to come to Fiji for about 18 years now. 18 साल से श्री गुरुदेव मुझे बतला रहे हैं कि आप फीजी आइए. So finally I got the intelligence to say yes, so I'll try to come with you this year. अब मुझे कुछ बुद्धि आई तो मैंने हाँ कह दिया और इस साल में आया. It's so nice to come and, as I said when I talked in Vyas Puja, to come and see your God brothers and God sisters that you hear on the other side of the world. और इतना अच्छा विचार था जैसे व्यास पूजा में मैंने कहा था कि अब दुनिया के दूसरी भाग से आकर देखे. And we're all actually one big family, and you finally get to meet your family, your brothers and your sisters. क्योंकि हम सब एक ही परिवार के हैं और हम आकर मिलते हैं एक दूसरे से. And as I said in Vyas Puja, I'll say it again, that I think the devotees here in the Fiji Yatra have the best service attitude of any devotees I've ever met. जैसे मैंने व्यास पूजा में कहा था, फिर भी मैं कहूँगा कि फिजी में जो भक्त लोग हैं, उनका सेवा भाव जो है वो सबसे उत्तम कोटि का है. And I think there's no way that we can ever repay you, but if you come to Dallas, we'll sure try. और किसी भी तरह से हम इसका रद्द-बदल में कुछ सेवा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको हमारे जलस आना होगा तब हम सेवा करेंगे. Thank you so much for serving us so much. I tell you, there's one thing that I really noticed. एक मुख्य बात था जो मैंने देखा. And I mean, I've been seeing devotees for 26 years. और लगभग 26 साल से मैंने भक्तों को नहीं देखा. But when I came here, I was really overwhelmed by the genuine smile of the Vaishnavas here. लेकिन जब मैं यहाँ आया तो वैष्णव का जो यहाँ के भक्त लोग का जो हंसी है उसको देखकर, वह मुस्कान को देखकर आश्चर्य में हो गया, प्रभाव हो गया. When the devotees, I could actually feel the sincerity when they smile at me. और भक्तों का जो सिंसियरिटी है जब उन्होंने हंसा तो मैंने देखा.
it made me feel very good to be a Vaishnava. ये बहुत अच्छा लगता है कि वैष्णव मिलता है Because they made me feel that they were very glad to see me. क्योंकि उनको ऐसा अनुभव होता है कि उनके अंदर भी बड़ा अच्छा भावना उत्पन्न हुआ जब उन्होंने मुझे देखा. And not just here in Lautoka, but in Southern, Lambas, all the countries, all these cities, I was impressed by the genuine smile that each devotee gave. They were not artificial. सभी जगह सुबह लौटका लंबा समय सभी जगह जब भक्तों ने मुस्कुराया तो कोई बनावटी मुस्कुराहट नहीं था. And I simply want to thank everyone for those very, very sincere smiles. मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने इतना हृदय से वो मुस्कुरा किया इसलिए. And I hope that you were satisfied with the smile that you got in return. और मैं यही सोचता हूँ कि आप भी वो मुस्कुराहट जो आपने दिया उससे आप संतुष्ट रहे होंगे. Hare Krishna. हरे कृष्ण. I plan on coming back. मैं कहता हूँ कि मैं फिर वापस आऊँगा. I would just like to say to all the devotees, to the devotees, that I've been so overwhelmed. Children has also asked my husband and I to come and to Fiji and praise your glory. Your devotion to your spiritual master has been absolutely overwhelmingly prominent in my mind. That always when I associated with every devotee, it was always Lautoka. And I believe that, you're all very, very exalted souls, and I feel blessed to have had your association. The Matatis are exemplary, and I have so much to learn from you. And also the men are exemplary in the way I see them treating the Matatis. So I just offer my obeisance to everyone. From Krishna, separate from Guru, separate from devotees. And I'm going to tell you that the pleasure that this transcendental vacation brought us is only about 1,000 times bigger than anything that we ever experienced in our own. And that is because we are surrounded by devotees, we are in association with our Guru, and all day long we are chanting since 4:30 in the morning to the evening darshans, to chanting japa. So that is, that's the life of Hare Krishna. Was swim in the ocean, spend time with the God brothers, takes heaps of prasadams, and go back with this belly now. So thank you very much. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, yeah, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
Viti Founder Acharya Srila Prabhupada Ki, Anna Koti Vaishnaviti, Namacharya Haridas Thakur Ki, River to propose Krishna Chaitanya Prabhupada Sri Advaita Gadadhara Srivasati Gaur Bhaktivedanta Ki, Shri Shridhar Krishna Govindam Shama Sundaram Bhakti Giri Govardhan Ki, Vrindavan Dham Ki, Mathura Dham Ki, Mayapur Dham Dham Ki, Jamuna Mai Ki, Ganga Devi Ki, Bhakti Devi Ki, Tulsi Devi Ki, Samavita Bhaktivedanta Ki, Sankirtan Yatna Ki. All glory is to the Son of God. All glory is to the Son of God. All glory is to the Son of God. All Premanandi.